Jamia has been glorious in its journey of more than 100 years now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. The most progressive institutions of India that he's ever seen. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما
और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। फरिश्तों ने कहा, अय अल्लाह, तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, हुए थे आके अनीफ़े माज़ूम वो दीवाने, हुए थे आके अनीफ़े माज़ूम वो दीवाने, उन्हें थे सुन के जो आवाज़ें बनाने वतन, उन्हें थे सुन के जो आवाज़ें बनाने वतन, यहीं से शौक़ी मेरा पियों को राहत मिला, यहीं से शौक़ी मेरा पियों को राहत मिला। किसी ने होश को बख्शा जुनून का पहला, किसी ने होश को बख्शा जुनून का पहला, यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, के दिल के तार वो किस तरह रखते हैं रोशन, के दिल के तार वो किस तरह रखते हैं रोशन, दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। ये है शौक़ की बस्ती, ये सफ़ीरों का दया, ये है शौक़ की बस्ती, ये सफ़ीरों का दया, यहाँ की सुगंधी डाली, यहाँ की शाम नई, यहाँ की सुगंधी डाली, यहाँ की शाम नई, यहाँ की रस्मों रहे बेकशी जुदा सबसे, यहाँ की रस्मों रहे बेकशी जुदा सबसे। यहाँ के जाम नए तरह रंग से जाम नहीं, यहाँ के जाम नए तरह रंग से जाम नहीं, यहाँ पे कष्टा नबी में कशी का हासिल है, यहाँ पे कष्टा नबी में कशी का हासिल है, ये बस में दिल है, यहाँ की सलाएं आम नहीं, ये बस में दिल है, यहाँ की सलाएं आम नहीं, दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। यहाँ पे शम्मे हिदायत है सिर्फ अपना ज़मी, यहाँ पे शम्मे हिदायत है सिर्फ अपना ज़मी, यहाँ पे क़िबला-ए ईमान का बाए दिल है, यहाँ पे क़िबला-ए ईमान का बाए दिल है, सफ़र है दीन यहाँ कुफ्र है क़याम यहाँ, सफ़र है दीन यहाँ कुफ्र है क़याम यहाँ। यहाँ पे राह नबी खुद हुसूल मंजिल है, यहाँ पे राह नबी खुद हुसूल मंजिल है, शनावरी का तकाज़ा है नौबनो तूफ़ा, शनावरी का तकाज़ा है नौबनो तूफ़ा, किनारे मौज में आसूदगी साहिल है, किनारे मौज में आसूदगी साहिल है, दया रे शौक
with the song Jamia, Raqs Gunaho Ke Din, Eid Hai Aaj. तुझको आवाज़ सीनों सा जवा होना है तुझको वापस सीनों सार जवा होना है हुए खामोश तुझे मेरा होना है मैं खामोश तुझे बेहरा होना है जामिया रक़्स गुना तेरी ताज़ीज़ को हासिल है मक़ामे महमूद तेरी तासीस को हासिल है मक़ामे महमूद इल्म हिकमत की है मेराज अमल तेरा वजूद ज़ाती रोज वलो मुख्तार के गहवारा नाज हर ज़बा पर ये दुआ हर ज़बा पर ये दुआ है कि तेरी उम्र दराज जामिया जिसको जो है तराशा है वो जो है तू है जिसको जौहर ने तराशा है वो जौहर तू है जिसकी कीमत नहीं कौन वो गौहर तू है जिसकी कीमत नहीं और वो मोहर तू है जामिया रक़्स गुना हो के तेरी ईद है आज जामिया रक़्स गुना जामिया रक़्स गुना जामिया रक़्स गुना Presenting the work to our audience. This faculty
heads of departments, directors of centers, University Librarian Dr. Vikas, Chief Proctor Professor Shahid, Chief Medical Officer Dr. Irshad Naqvi, principals of schools, coordinators of NSS and NCC, Director of Games and Sports, Provosts of Halls of Residence for our boys and girls, Media Coordinator, all faculty members, and of course, all my dear students here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this very important day of Jami Millia Islamia, the 104th foundation day of this glorious institution. I say glorious because Jamia has been glorious in its inception as a baby of the freedom movement of India. Jamia has been glorious in its journey of more than 100 years now. She has been glorious in its rise to an A++ university at the 3rd position in all the universities of India. And above all, she has been glorious in her love, celebration, and embracement of all kinds of diversity. This Foundation Day is very special because Jamia has a new Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif. We welcome you, sir, to Jamia and hope that your tenure with us will be a joyous one and a fruitful one for all of us here. This day is also very special as we have amongst us Padma Shri and Padma Bhushan, Dr. Ashok Seth. He is kind enough to be with us on this festive day as we celebrate our university today. Jamia Millia Islamia made a very modest beginning in 1920 at Aligarh with the resolute determination of its founding members, Maulana Muhammad Mahmud Hassan, Maulana Muhammad Ali Jawhar, Janab Hakim Ajmal Khan, Dr. Mukhtar Ahmad Ansari, Dr. Janab Abdul Majid Khwaja, and Dr. Zakir Hussain. And we all need to remember these names every year, if not every day. To create an institution, these people created an institution that would manifest indigenous ethos and the spirit of plurality. It was conceived as a national institution that would offer progressive education and nationalistic ideals to students from all communities, particularly to the Muslims. The emergence of Jamia was supported by Gandhiji and by Tagore, who felt that Jamia could shape the lives of hundreds and thousands of students on the basis of a shared culture and a shared worldview. Jamia's development is marked by the sacrifices made by the students and the staff and a host of individuals who contributed through innumerable efforts. And this includes our alumni too, for which we have a very strong alumni connect at Jamia Millia. We at Jamia continue to serve the nation through quality teaching and research, through the production of competent, skilled, and sensitive human resource that would catalyze enrichment of physical and human environment. We are bringing in the best of national as well as international practices through the development of collaborative partnerships with institutions of excellence, both domestically and internationally, by signing MOUs as we ourselves are striving to become an institution of excellence. We are committed to offering cutting-edge learning experience, internationally benchmarked education, intellectual freedom, and critical research opportunities in the frontier areas of contemporary concern. Jamia Millia Islamia has a multi-layered educational system which covers all aspects of schooling, undergraduate, postgraduate, PhD, and postdoctoral education. With 11 faculties of learning, 47 teaching and research departments, and over 29 centers of learning and research, we attract the brightest young minds from all over the country.
They use the creative space that Jamia provides to actualize their potential. We have a very impressive number of PMRFs also, Prime Minister's Research Fellowships here, working in the chosen area of science. Jamia's great founder, Maulana Muhammad Ali Jawhar, was a distinguished alumnus of two very great educational institutions, the Muhammadan Anglo-Oriental College at Aligarh and the University of Oxford. And I'm sure that today, had he been here, he would have been thrilled with the remarkable academic profile of the institution that he, along with others, had founded in makeshift tents over 100 years ago. Jamia is no ordinary university, and you all know it. It is heir to the nationalist movement of a university that counts Gandhiji as one of its earliest patrons, an institution that was sustained and kept alive in very difficult times by men of extraordinary distinction. Dr. Ansari, after whom this auditorium is named, Dr. Zakir Hussain, Professor Muhammad Mujib, amongst many others. Jamia today is a university whose campus, facilities, infrastructure and academic breadth compare favorably with any university in India. But the aspect of Jamia that gives one the greatest satisfaction is you, my dear student body. In your diversity and your collective presence here today, our students show us what India could be if it lives up to its extraordinary potential. A modern university has to pay very special attention to its public profile. To this end, Jamia has invited a constellation of distinguished visitors to share their ideas with the university community. The Secretary General of United Nations, Mr. Ban Ki-moon, the Speaker of Lok Sabha, Srimati Meera Kumar, His Holiness the Dalai Lama, Turkey President Erdogan, Nobel laureates Professor Amartya Kumar Sen and Professor Muhammad Yunus, the Australian High Commissioner, the ambassadors of Suriname, Brazil and Kazakhstan, the musical maestro Pandit Hariprasad Chaurasia, Ustad Zia Khan, distinguished activist Aruna Roy, and a host of others were some of the many luminaries who cared enough about Jamia to come and share their time with us. Academically, Jamia has strengthened all its departments and faculties, and we strive to be better every day. To ensure that we have the highest quality of publications, an institutional academic integrity panel is in place. We have, of course, all possible committees to address the issues of students and teachers like the IIC. We have the grievances committees and other committees in place. Jamia has a very excellent games and sports facility where our teams regularly practice and then bring home laurels from inter-university and zonal events, and much more. Our students take part in NCC and NSS activities regularly and earn their respective certificates. There was an NCC camp for the last 5 days, and you saw them give a guard of honor today. The NSS had arranged a blood donation camp yesterday, which was a very successful one, and we got a number of units of blood. That shows us the empathy that our students have for the humanity. Jamia has a very high regard for upkeeping the dignity of women, and that, of course, of men too. We are part of the Government of India's pilot project on that is Gati, which is the Gender Advancement for Transforming Institutions. To ensure that our students are getting an opportunity for all-round development, Jamia has developed a number of clubs under the aegis of the DSW office. We have clubs for music, dance, literary activities, quiz, debate, fine arts, science, gender champions, to name some. Proper classes for these clubs are held after 5:30 p.m. to train our students in these activities, to make them come out as a wholesome individual, very strong in academics as well as strong in other areas. We have right now a total of 8 boys hostels with a total capacity of 2,220 students,
in 7 girls' hostels that can accommodate 2,022 students, and there is also a residential coaching academy that trains the IAS aspirants to take their exams. Jamia gives a number of scholarships to students, notably the Merit Scholarship, the Central Scholarship, and a large number of sponsored scholarships too also. To add to this, the teachers of Jamia all contribute every month from their salaries towards giving scholarships to the needy meritorious students. I congratulate everyone here, present here and not present here, on this Foundation Day for everything that we have achieved, and wish us every happiness and success in the great adventure of life that is before us. Thank you very much. हम अपने चमन को सजाएं, आओ कदम बढ़ाएं, हम अपने चमन को सजाएं। आरज़ू है ये शहरे आरज़ू है, हम इल्म की शम्मा जलाएं। जामिया 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 सजाएं, जामिया 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 सजाएं। जामिया इल्म की शम्मा जलाए, जामिया 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 सजाए। दीवाने जो इसके हैं, साकिरो अजमल जैसे हैं। इल्म हुनर के माहिर इसमें सबके दिल में रहते हैं। दीवाने जो इसके हैं, साकिरो अजमल जैसे हैं। दीवाने जो इसके हैं, साकिरो अजमल जैसे हैं। शहरे आरज़ू है ये शहरे आरज़ू है, हम अमन मोहब्बत लाए। जामिया 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 सजाए, जामिया 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 सजाए। जामिया जामिया हम इल्म की शम्मा जलाए, जामिया 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 सजाए। जैसे हमने सोचा, ऐसे तुम भी चाहो इसको। जैसे हमने इसको चाहा, ऐसे तुम भी चाहो इसको। खून जिगर से लिखते हैं हम, दीवाने हम इसके हैं। जैसे हमने इसको चाहा, वैसे तुम भी चाहो इसको। शहरे आरज़ू है ये शहरे आरज़ू है, हम इसका तराना गाएं। जामिया 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 सजाए। जामिया 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 सजाए। जामिया जामिया हम इल्म की शम्मा जलाए। जामिया जामिया हम अमन मोहब्बत लाए। जामिया जामिया हम इसका तराना गाए। जामिया 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 सजाए। की ज़रूरत क्या
शादी में भी क़यामत की अदा होती है। ऑनरेबल डॉक्टर अशोक सेठ साहब, चेयरमैन फोर्टिस स्पोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर सीमा फरहत वसीर साहबा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, माय ब्रदर Naseem Haider Sahib, officiating registrar, my respected deans, esteemed colleagues, my dear employees, and of course, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am so emotionally discharged that whatever speech we have prepared, I would not like to read it out, because the contribution of Jamia has already been very well picturized by our Dean of Students. You see, the foundation of Jamia was on the base of Nai Taaleem, a dream of Mahatma Gandhi. We have three components of Taaleem: Taaleem, Ilm, and Tahzeeb. शिक्षा, ज्ञान और संस्कार. If you don't have these three components, we cannot reach to the goal. Our goal is ilm. Utlubul ilm law kana bis-sin. जिंदगी का मकसद इल्म है. जो रास्ता that leads to ilm is तालीम. और जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, वो साइकिल भी हो सकता है, बाइक हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड तहजीब. इफ आवर तहजीब इज नॉट वेरी वेल एज्यूमुलेटेड विथ आवर इल्म एंड तालीम, आई एम वेरी सॉरी टू से वी कैन नॉट रीच टू आवर गोल. There is a very big difference between ilm and taaleem, jnaan and shiksha. My dear students are sitting here. For them, let me give you one example. My esteemed colleague from mechanical engineering department, they have their own car. If they start from Jamia, they want to go to the airport. In between, अगर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, दो दे आर इंजीनियर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दे आर वेल नोन टू द अबाउट ऑल द मशीन्स, बट दे आर नॉट एबल कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर सके. दे विल कॉल द जो गैरेज वाला छोटू मोटू होता है, तो उनको कॉल करेंगे. छोटू कहेगा सर आप स्टार्ट कीजिए ना, वो आवाज़ सुनेगा, 5 मिनट के अंदर में गाड़ी ठीक कर देगा. वो जो छोटू मोटू कमिंग फ्रॉम द गैरेज आ रहा है, जो गाड़ी ठीक कर दे रहा है, दैट इज इल्म, वो ज्ञान है. प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो तालीम. माई ड्रीम इज दैट कोई भी मेरा तालिब इल्म इस जामिया में अगर दाखिला ले रहा है, जब वो जामिया से जाए तो उसके हाथ में एक स्किल्ड हो, एक हुनर. चाहे वो मिनिमम हुनर गाड़ी ड्राइविंग का ही क्यों नहीं हो, बट ही और शी, माई ऑल स्टूडेंट शुड हैव, मस्ट हैव वन काइंड ऑफ स्किल इन देयर और हर हैंड, दैट इज क्वालिटी. ये दिस इज द थिंग, और ये बेसिस है जिसके ऊपर दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड. So let me remember to all our founders, मैं उनकी याद को
मैं उनकी ताज़ीम को, मैं उनकी तकरीम को, मैं उनकी कुर्बानी को, मैं उनकी फिदाकारी को सलाम करता हूँ और रब्बे जुल जलाल से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी हों अच्छे हों और हम लोगों के लिए भी दुआ करें ताकि हम अपने मकाम को पा सकें। Today we have with us a great doctor and heart specialist. Sir, in my subject, the heart is reason of every disease. आशिकी पैदास जारी दिल, नीस्त बीमारी चुन बीमारी दिल। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैज सेड कि नीस्त बीमारी चुन बीमारी दिल, यानी दिल की बीमारी की तरह अल्लाह ने कोई दिल ही नहीं बनाया। इसीलिए कहा था इन्नल अमाल बिन्नियात, यहाँ है सब चीज। तो सर, आप तो हमारे दिलों के राज जानते हैं, खोलने के बाद अल्लाह आलम भी सवाब क्या क्या दिलों में है वो सब जानते हैं सर। मैं आपकी बुजुर्गियत को, मैं आपकी महारत को, मैं आपकी उस्तादी को सर नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ सर। दोबारा मैं इस जामिया में आपका इस्तेमाल करता हूँ सर, आपका चरण स्पर्श न करता हूँ। कहा जाता है कि दो ही आदमी को दिल की बीमारी होती है, या तो दीवाना हो, नहीं तो खुदा जिसको तौफीक दे, तीसरा आदमी नहीं हो सकता। मैं सर इस शेर को आपकी नजर करता हूँ, आपके बड़प्पन को, कि तुम न समझो कि तेरा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। सर, इस यूनिवर्सिटी का एक और कंपोनेंट है तहजीब, सकाफत, संस्कार और संस्कृति। ये मैं तमाम अपने बच्चों को जब देखता हूँ तो उनके कपड़े से, उनके अक़वाल से, उनके अफ़आल से, उनके किरदार से जामिया के रिवायत की, सकाफत की झलक लगती है। और यही हमारी सबसे बड़ी जो है पूंजी है, ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हर आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। आप ध्यान रखें, आदमी और इंसान में फर्क है। हर आदमी इंसान नहीं हो सकता। जब तक कि हम आदमी हैं, उसमें भेड़िया भी है और इंसान भी है। जब हम आदमी के उस स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, एक स्टेज पर पहुंचते हैं जब हमारा भेड़िया मर जाता है, सिर्फ हमारे अंदर इंसान होता है, तब इसको कहते हैं कि यस हम इंसान हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये मर्द कामिल है। मर्द कामिल कौन? ऐसा इंसान जिसके बदन के किसी भी आज़ा से किसी भी जानदार गैर जानदार को तकलीफ न पहुंचे, वो इंसान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम तबरी ने कहा है, इमाम अस्कलानी ने भी कहा है, और इमाम बाक़वी ने। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इंसान बने, अपने बदन के किसी भी आज़ा से किसी भी जानदार और गैर जानदार को नुकसान न दें, क्योंकि खुदा जो है हर इंसान के दिल में रहता है। आप किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे तब तो खुदा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो तीसरी बात, हमेशा जो है जो डिसिप्लिन क्यों बनाया, आपके लिए बनाया गया, उसको मेंटेन करें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शैतान और रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन क्या ले गया उनको? एक बेअदबी खत्म कर। कहा जाता है कि बहुत सारे जब जाहिल हो, वहाँ आलिम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, वो बैठ के पीछे से तमाशा देखता है। और जहाँ आलिमों की जमात हो, वहाँ आलिम चुप रहता है,
और जहां आरिफों की जमात हो वहां आशिक चुप रहता है और हंसता है। ये हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, हमारी रिवायत है, इसको हम इंशाअल्लाह बरकरार रखेंगे। मैं आज फाउंडेशन के दिन मैं आपसे खुदा को हाजिर नाजिर मानकर ये वहद करता हूँ कि आपकी मदद से, अपने टीचरों की मदद से, अपने स्टूडेंट की मदद से इंशाअल्लाह हम इस यूनिवर्सिटी को ऊंचे से ऊंचे मकाम पर ले जाएंगे। आप लोगों की हमको मदद की ज़रूरत है। मैं क्या हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी ऐसी तो नहीं है। वकील अल्लाह तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ बियदिकल खैर, अल्लाह ने नवाज दी इसीलिए बैठा हूँ। नहीं तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अल्लाह का करम है। हमसे बड़े बड़े यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। तो ये ध्यान रखें, इंशाअल्लाह हम एक साथ काम करेंगे और आगे ले जाएंगे। मैं ऑन माई बिहाफ एंड बिहाफ ऑफ द डीन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंटायर कम्युनिटी, आई ऑफर माई सिंसियर थैंक टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स, from department, all of my employees and all of my esteemed colleagues, जो आपने मुझको ऑनर दिया, जो आपने मेरी इज्जत की, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। Once again I extend my greetings and best wishes to all of you on the 104th Foundation Day, and लास्ट में कहूँगा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यश्चित्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका कल्याण, सब खुश रहें, सब अच्छे रहें। और आखिर में दोबारा मैं आप लोगों के सामने सर दूँ कि आपने हमको जो है ये इज्जत बख्शी। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पर उससे पहले लेट मी जस्ट गो बैकवर्ड्स कि क्यों ये एसोसिएशन उससे भी पहले की है। इट इज नॉट 1988 that I got associated with Jamia. It was the AMU. I'm a graduate, I'm an Algerian. And I'm privileged and proud. I'm privileged and proud to be an Algerian because that university gave me exactly, जो आसिफ साहब कह रहे थे ना, इल्म, तहजीब, उस यूनिवर्सिटी ने हमें सिखाया कि किस तरह सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, किस तरह भाईचारा भी होता है, किस तरह आप इकट्ठे बैठ अब तक एज अलेगेरियन ब्रदरहुड से एक दूसरे से गले मिला के किसी वर्ल्ड में किसी कोने में भी आप मिल सकते हो, एक दूसरे के लिए जीते हो। और वर्ल्ड में कैसे जीना है, अर्थ में नहीं, वर्ल्ड में कैसे जीना है, वो सिखाया जाता है। So that is why I say कि when I go back to the history of Jamia and say कि हम भी, जामिया भी उसी रूट से पैदा हुई थी, वहीं से तो स्टार्ट हुआ था। जिस टाइम पे MAO, द मुस्लिम और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी साल जामिया भी एस्टैब्लिश हुई। जामिया वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंटी कॉलोनियलिज्म जो कि शायद MAO नहीं था, and it was created for the fact कि pro-independence, anti-colonial, being the biggest and the most impressive national university, supported by Mahatma Gandhi ji, right from his heart, or intellects like Rabindranath Tagore himself said that probably this is one of the most progressive institutions of India that he's ever seen. We live in that tradition, and I say we because मैं भी तो आपका alumni हूँ. So we live in that tradition, and we can't forget that tradition, we can't forget that legacy, because Jamia has excelled
in education. Yes, we heard Professor Simi Bashir talk about Jamia, its excellence. It may be ranked third, but it was also ranked the first. And it's always existed in the first 5 universities. Every faculty has existed in the first 5 universities. So जब हम आप लोग देखते हो और कहते हो थैंक गॉड यहाँ पे फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट है, हार्ट का सबसे एक्सीलेंट सेंटर, तो हम कहते हैं हम भी प्राउड हैं कि हिंदुस्तान का सबसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट ग्रेजुएट्स, द बेस्ट ऑलराउंडेड ग्रेजुएट्स भी हमारे साथ में है. Today we are proud, 104th Founders Day. I've been here before. I've been here for the Founders Day before. मैं इंडिपेंडेंस डे पे भी आया था. और आपके साथ तो अक्सर मुलाकात होती रहती है. I don't mean वहाँ पे. और होनी भी नहीं चाहिए वहाँ पे. But ये भी है कि you know when we also talk about this, I did not know कि Hakeem Ajmal Khan Sahab इतने involved थे, because as you know, as we grew up in AMU, तो अजमल कातिबिया कॉलेज तो हमारे साथ ही था. इनफैक्ट हम पढ़ाने जाया करते थे कई बार वहाँ. And didn't even realize that that's where Jamia started from. But today we proud कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मुख्तार अहमद अंसारी साहब, अब्दुल ख्वाजा साहब created this institution. Actually, it was a mission. Institution नहीं एक mission थी. And I think that mission was understood by a few at that time, but it grew with support in the most difficult times, as has been said, to its present status. That we become proud of this university in multiple ways. You know, I was privileged to be associated with your numerous vice chancellors, who then became close friends. Shahid Mehdi Saab, Mushir Hassan Saab, Najib Jang Saab, Professor Najma Akhtar Sahiba, all became close friends, but were also associated in multiple ways with the connect of AMU. And that was tremendous. But also today is a very privileged day for me. And it is privileged because I'm able to meet your new Vice Chancellor, the eminent new Vice Chancellor, Asif Saab. I can't believe that usi Asata, and this is your first official function. I've read so much about you, I've learned so much about you. Inka har couplet takes you back, not to the present Urdu, but takes you back to Persia, takes you back into history, takes you back into an intellect which is so powerful that we will only absorb it over the next 5 years. अब तक ये पढ़ा रहे थे, अब ये आपको सुनाएंगे. But those are the intellects which really make us. अगर मैं अपनी आपकी जिंदगी की बात करूँ, and let me now get back to some realities of life, तो आप कहोगे कि ये पद्म भूषण, पद्मश्री and honorary doctorates of 6 national universities, which include 3 of the most prestigious in my mind, which is आपकी और हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया, आपकी और हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे पता है कि कई वहाँ के अलीगेरियन जरूर होंगे, and then Banaras Hindu University. Now these are the 3 most prestigious universities of our country, and to be awarded doctorates means that शायद मैं कहीं पे successful है ना, that's what you would think. कि खड़े हुए हैं बहुत successful डॉक्टर, मजा आ गया सुन के, अरे बने कैसे, यहाँ तक पहुँचे कैसे. So let me just tell you नुस्खे होते हैं ना, वो मैं समझाता हूँ. You see the biggest failure here. अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये समझ लो कि I'm one of those जिनको 3 साल में मैं मेडिकल में घुस नहीं पाया था. I could not clear that exam to get into MBBS. 1 साल प्री मेडिकल की, उसके बाद नहीं हुआ. फादर ने कहा
कि नहीं, डॉक्टर तो बनना ही है तुमने। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर की, उसके बाद भी नहीं घुस पाया मेडिकल में। उस वक्त मैंने कहा कि यार ये क्यों मेरे फादर कहते जा रहे हैं, मेरे को तो, मैं बीकॉम करना चाहता हूँ। मेरे को अभी भी याद है, उस वक्त पिताजी तमाचे मारा करते थे, आजकल तो नहीं मारते। और उन्होंने एक मारा कहा, उस वक्त उनका दिमाग ही यही था कि डॉक्टर बनना है। उन्होंने क्या बीकॉम कौन सी चीज़ होती है, तो डॉक्टर नहीं तो। तीसरा साल बीएससी थर्ड ईयर, अब मैंने कहा इसके बाद तो मैं घर से भाग जाऊंगा अगर इन्होंने कहा डॉक्टर। एनीवे व्हाट हैपेंड वाज कि, एंड आई मे गो ओवर टाइम इफ यू डोंट माइंड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी की बातें जो आपसे करनी जरूरी है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हियर। तो एनीवे फाइनली ऑन द थर्ड, आफ्टर बीएससी थर्ड ईयर, एक ही मुझे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पोजीशन मिली, वो भी सेकंड वेटिंग लिस्ट में 7th पोजीशन इन एएमयू जैन मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। मैं सबसे 2-3 साल बड़ा था जो भी मेरे साथ थे, बट जिंदगी का मजा आ गया। उस तक फादर अफ्रीका चले गए थे, ही वाज अ डॉक्टर, डेपुटेशन पे चले गए, जिंदगी का मजा आ गया। वैसे भी मैं पढ़ाई में कोई खास था नहीं, बट मजा इतना आया कि हर इंटरनल एग्जाम में मैं फेल होता रहा। और कोई पूछने वाला था नहीं, और मजा जिंदगी का बहुत आ रहा था, पैसे आ जाते थे बाहर से। हुआ ये कि 1.5 साल में वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम होता है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, फर्स्ट प्रोफेशनल। उसका रिजल्ट निकला तो मैं सो रहा था, और उस वक्त नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता था। तो लोगों ने मुझे आके कहा कि उठो, तुम्हें एनाटॉमी में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये मजाक तो होते रहते थे, कभी कोई पानी डाल जाता था, कभी कोई कुछ कह जाता था। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें मत सुनाया करो, आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। हो गई दोपहर, 2-4 लोग और आके कहा कि भाई जाके देख लो, यू आर अ टॉपर। टॉपर तो मेरे बाप हुआ करते थे। Actually, it was by this time, enough people had told me, 6 o'clock in the evening, I decided कि notice board पे जाया जाए। This was in the lobby of our medical college, खाली था, सुनसान था। मैंने उस notice board पे देखा, अपना नाम नीचे से पढ़ना शुरू किया तो ऊपर में, and I was there. So what did that mean? मैं उसको देख रहा हूँ, and it meant gold medal in the university in anatomy. Now, as the system was, कि उसके बाद आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास अगले दिन जाके थैंक यू कहना पड़ता था, बैठ के बात करनी पड़ती थी। आफ्टर ऑल यू आर नाउ अ टॉपर। तो मैं गया अगले दिन, हमारे डी कुमार साहब थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर, बैठे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं अशोक सेठ हूँ। उन्होंने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं एनाटॉमी में टॉप किया है, मेरे को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। वो कहते हैं आइए बैठिए। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने सोचा शायद एनाटॉमी का पूछेंगे, मैंने कहा जरूर पूछिए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरे को बात ही करते थे ऐसे कह के डॉक्टर साहब। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को देख, ये हुआ कैसे? फर्स्ट सिंगल क्वेश्चन ही आस्क्ड एंड आई लुक्ड एट हिम and I said, sir, I also came to ask you that. That day I said, कि या तो you will actually have to repeat this. You will have to come first. You will have to get gold medals. Because if you don't, you will be ridiculed, criticized or forgotten. And I didn't want to be that person. जो कि be ridiculed, criticized and forgotten. And then from there on, I had another 4 gold medals at the university. So, समझने की बात ये है कि when you succeed, then the penalty for that success is to succeed again. Otherwise, be ridiculed. मैं आपको फाइनली कुछ और कन्वर्सेशन, दिल की बातें हैं, ये करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है।
तो अगर आप समझो कि देयर आर टू पर्सनालिटीज अ पर्सन कैन सक्सेस क्या चीज़ आप है। आई मीन ऑल ऑफ यू वुड से मैं डॉक्टर सेठ की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं आसिफ साहब की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर प्रोफेसर बशीर की तरह फैसिनेटिंग अचीवमेंट्स करना चाहता हूँ। तो ये क्या है सक्सेस? सक्सेस इज अ परसेप्शन, सक्सेस इज नो रियलिटी। सक्सेस एट सम स्टेज ऑफ लाइफ अर्ली ऑन इन योर कैरियर में मीन कि यार मैं ये पोजीशन अचीव कर लूँ, मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। उसके बाद सक्सेस क्या होगा? सक्सेस होगा कि पैसे बहुत आ गए, किस तरह पैसे हों। उसके बाद एजुकेशन, ये वो, बच्चों की सक्सेस, प्रायोरिटीज चेंज। बट आई टेल यू टू थिंग्स अबाउट अ सक्सेस। ये सब परसेप्शन की बातें हैं। देयर आर टू पर्सनैलिटीज दैट यू हैव टू पोजेस फॉर सक्सेस। एक तो है कैरेक्टर ट्रेट्स। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी पैशनेट, you have to be caring for others, you actually have to have honesty, you have to have determination, good traits, you have to be bonded. एक कैरेक्टर सही होना चाहिए और एक पर्सनालिटी होती है। कपड़े अच्छे पहनो, सूट शूट पहन के आ गए, लेक्चर देने जामिया में पहुंच गए, ऐसी तकरीर की कि सब इम्प्रेस हो गए, बड़ी अच्छी उर्दू आती है, बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, जब बोलते हैं तो लोग सुन के चुप हो जाते हैं। दो पर्सनालिटीज हैं ये, कैरेक्टर और ये आप बोले कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ट्रेड्स हैव टू कंबाइन टुगेदर टू मीट सक्सेस। और वो एक सक्सेसफुल शख्स बना दिया गया, और वो शख्स सक्सेसफुल शख्स चलता रहा अपनी जिंदगी में। जब बोलता था, कपड़े पहनता था, तो लगता था कि ऐसे यार चमक गया, सब कोई चुप हो जाते थे। और कैरेक्टर उसका ऐसा था कि he was a very good man। और हुआ क्या? धीरे धीरे बातें चलती गई, वो बूढ़ा होता गया, एक दिन उसके बाल झड़ने लगे, एक दिन उसका पेट निकल आया, एक दिन आर्थराइटिस हो गई। वो सब पर्सनालिटी धीरे धीरे जीरो हो गई। अब वो मुझसे बोल ही नहीं पाता था। तो क्या रहा जिंदगी में? लोग क्यों कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है? वो फिर भी उसको सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो कैरेक्टर ट्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स। अगर आपने कैरेक्टर पा लिया तो आपकी पर्सनालिटी तो कभी भी खत्म हो जाएगी, बट वो कैरेक्टर के नाम पे आपको हमेशा लोग कहते रहेंगे कि वही आदमी है जो सबसे अच्छा है, वही आदमी है जो सबसे अच्छा है। आई अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इश्यूज, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी एवर नोन एज द most powerful doctor, the richest doctor, or the doctor who achieved everything, कि वो ऐसे प्रोसीजर्स कर देते थे जो कोई नहीं करता था। क्या ग्रेट डॉक्टर थे, क्या ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट थे, मज़ा आ गया ऐसे उनको मिल गए। सिर्फ एक बात है, he was a good doctor, और कुछ नहीं, he was a good doctor, but he was a good man। अगर वो हमने अचीव कर लिया तो that is all we need to do। I'm not saying कि मैं वैसा हूँ, बट हमेशा दिमाग में आता है कि अगर वो हम अचीव कर सकते हैं तो वो हमें कभी भी लास्ट दिन तक नहीं छोड़ेगा। वही एक मैं समझाना चाहता था। बातें तो बहुत करने की हैं। आई कुड कंटिन्यू फॉर आवर्स पासिंग ऑन मैसेजेस टू यू, बिकॉज व्हेन यू लीड अ लाइफ लाइक माइन यू रियलाइज कि इट इज़ नॉट बीन ऑल सक्सेस। कहीं चीज़ें रह भी गई। If you get very passionate about work, अगर आप कहते हो और अगर आप कहते हो प्राइड से कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मैं 20 घंटे काम करता हूँ, मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं अस्पताल में कभी भी पहुँच गए मिलता हूँ ना, तो सक्सेस नहीं है। मे बी यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, मे बी योर फैमिली मिस्टेक, मे बी दोज हु कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस वर अनसीन, वो रह गए पीछे। Those are the important things of life that you have to remember. Success is a perception. Success means जब आप हर कोई को साथ लेके आगे बढ़ते हो, सिर्फ अपने अकेले आगे कभी नहीं निकलते। With that, I think great to see you all. कभी भी बातें करता हूँ तो दिल से बातें करता हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ, दिल से ही बातें करता हूँ। Do well. You all are messengers of Jamia Millia Islamia. You have to be proud of the university you are, but spread knowledge, spread love.
be a flower and fragrance for the nation, for the world. तब हमारा जो AMU का तराना है, मजाज साहब ने लिखा था, बट उसकी जो फर्स्ट 2 couplets है ना, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं तेरे अपने चमन का बुलबुल हूँ. That bulbul word is absolutely for this purpose. मैं अपने चमन का बुलबुल means the bulbul is the most beautiful bird whose sound is spread across the world. So that meant कि मैं अपने चमन में नहीं रह रहा. That bulbul is for the world. And actually this is what you need to know. Each of you is being created for the world, for spreading knowledge, for spreading affection, for spreading love, and being a flower and a chirping bird for the rest of the world. So those messages stay well. I'm privileged to be a part of you. I'm privileged to be on a Founders Day, and surely we will meet again. यहाँ पे, वहाँ पे नहीं. Dr. Vikas, University Librarian, my esteemed colleagues, and my dearest students. Today, as we stand here celebrating the 104th Foundation Day of Jami Islamia, our hearts are filled with a profound sense of pride and gratitude. This day is far more than a mere anniversary. It is a day that binds us to our history, our values, and our unbreakable spirit. We are reminded of the tireless visionaries who over a century ago dared to dream of an institution where learning would transcend boundaries, where knowledge would unite rather than divide, and where education would become a beacon of hope for generations to come. The birth of Jamia was no ordinary event. It was born amidst the turbulence of India's struggle for independence, fueled by an unyielding spirit that refused to back down, even in the face of adversity. Those early years were not spent in grand halls or towering buildings. Our university began in humble tents and makeshift structures, driven not by resources but by an unshakable belief in the power of education. Mahatma Gandhi ji, Maulana Muhammad Ali Jawhar, Dr. Zakir Hussain, Hakeem Ajmal Khan, Dr. Mukhtar Ahmad Ansari, and Maulana Mahmud Hassan, along with many other trailblazers, fought with all they had to give life to an institution that would stand as a testament to resilience, harmony, and unwavering integrity. And look at us now. Jami millia Islamia, from those modest beginnings, has blossomed into a symbol of excellence, a sanctuary of knowledge, a family. This legacy lives on in each and every one of us, in every step we take on this campus, and in every dream we carry forward. As I पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे मोहब्बत लाए